ओरा जी ओरा I'm really very happy for my brother Amit. He puts really a lot of hard work in whatever brands he do, whether it is Tanatan, whether it is Rasoi, Muthuswamy, Megumi, all the brands that my brother has done. He really puts his entire hard work behind creating each and every brand that he has done. And I wish him all the best. And I already know, like I've been telling him since last 10 to 15 days, that right from day one, there's gonna be rush over here outside. It's gonna go house full. The ambience that he has done, he's done a fabulous job by bringing up the brand. And obviously, when it's Amit, the food quality has to be number one. Thank you very much, bro. Thank you very much. Always your support. Thank you. I wish him all the best, and he will definitely rock. There's no doubt about it. Thank you. Please come. Akib. Very excited. Kerala food. My favorite dish, egg roast. Egg roast. Yeah. Appa verso. Appa verso, egg roast also. I will go. Bye. नमस्कार श्री तांडव ओरा जी तांडव ओरा जी राइट रुको जरा भाई देख लो पहले यहाँ पे ओरा जी ओरा ओरा हाँ हाँ ओरा जी यहाँ पे अरे रुको जरा फिर तांडव करेंगे हम लोग आज Tanatan to his favorite. Yeah, of course. He's Now always- Kerala kitchen is my favorite. Sorry, I've changed my. I know you like you love South Indian food. Yeah, I love South Indian food and I love him also. And many congratulations for such a wonderful restaurant. बहुत ही अमेजिंग खाना है. मैं हमेशा से क्रेव कर रहा था कि एक अच्छा साउथ इंडियन खाना मुंबई में होना चाहिए बिकॉज आई लव साउथ इंडियन फूड. एंड अमित भाई ने मेरी वो बात सुन ली. सुननी चाहिए ना, correct? Of course. Yeah, it's a beautiful place. The ambience, the food, everything is amazing, and I would suggest everybody to come and have a taste of Mr. Amit Pal's hospitality. I think that fried chicken, Kerala pepper chicken, which Pepper chicken, I tried.
chicken 65. Chicken 65, that was the best. And mutton also cutlet. mutton curry, cutlet. mutton Rogan Josh. Mutton Rogan Josh, yeah. I love non-veg, so yeah. Those were my favorites. Appams also. Appam. The Your list Kerala can go. paratha is The there. list can go on. And, the list can go on and on. But abhi, I think I'll pick my top. आपका खाने वाला आज मैं क्या खाने वाला हूँ? मैं सब खाने वाला हूँ. जो जो मेन्यू में होगा सब खा जाऊंगा. आज सुबह से एकदम He's भूखा such है a true friend today. He took off from his shoot Of course. and he's just coming only for my launch. Yeah, of course. Thank you very much. Thank you so thank you, much. bro. Thank you. Thank you. Thank you. Come. Sure. Thank you. केरला मिक्सर आज Yes, sir. Yes, sir. Sir, you are right, sir. Oh, sir, you right. Sir, you are right, sir. Sir, ma'am, you are right. वही हैव टू अंडरस्टैंड टनाटन तो बहुत देर से चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है. एंड रामी जो है होटल वो मेरे घर के एकदम पास है, तो मुझे पता है कि लोगों को कितना प्यार है उस खाने से, उस जगह से. एंड यहाँ ये खुल गया है और वो भी ऑथेंटिक केरला. तो आई जस्ट लव इट. केरला इज़ अ वंडरफुल. जो उनका खाना है बहुत हेल्दी होता है. पत्तों में मिलेगा, पत्ते में मिलेगा ना. Yes, we have a Sunday. We have every Sunday will be a sadhya. साथ में Like I would recommend, like if you love Kerala food, you should come on Sunday brunch. Okay. We have a nice sadhya, properly, like 42 items served on a table. आज कुछ ना कुछ सब कुछ ही खाएंगे. Yes, yes, बस ये yes. पिएंगे नहीं, क्योंकि अभी तक होली का इफेक्ट चल रहा है. Thank you for coming, sir. ऑलवेज अ प्लेजर. बाजी बाजी यहाँ देखिए. बाजी यहाँ देखिए. पारुल खाना खिला. आजा. And I love Kerala food. You will laugh. सोलो तू भी आजा. Sir, you are right. Sir, look here, sir. Sir, look here. Come. On your right. How are you? Look here, sir. You are right, sir. We're super excited to be a part of
such a lovely experience that Amit has put together, and we loved the entry. It was so beautiful and so experiential, and can't wait to dig in to whatever has been curated and to taste all the flavors, of Kerala. And we're looking forward to it. It seems to be beautifully conceptualized also. Thank you, Nikki, for such a beautiful words. Whatever Mr. Amit Pal touches is a success. So all the best to Kerala Kitchen is all I can say. Thank you. Thank you. Thank you. राइट में इधर देखिए, इधर देखिए। मैडम थोड़ा पीछे आ जाओ। ये तुझे नहीं रखते थे पैन में। I wish them a lot and lot of love and luck. Because I love South Indian food, so I'm really excited to try everything. Dosa. Everybody's dosa. I love dosa. So yeah. Thank you. Thank you guys. यस यस सर, यहाँ देखिए सर। सर यहाँ देखिए, सर यहाँ देखिए। सर यहाँ देखिए सर एक बार। यस सर। इसका नाम क्या है इसका? सर Sir, सर यू आर राइट। क्या बात है, जो है वो है। ये अच्छा बाइट कर दे। ये बस हो गया। First of all, congratulations to Raj Shetty and Amit Palji. I think when friends and entrepreneurs open something in Mumbai, it's really special. And coming to our own Juhu, I'm very excited. Of course, Kerala cuisine offers something very authentic in spices, and that's something that stands out. I'm a big fan of Kerala cuisine. आज थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है, इंडिया का मैच है सेमीफाइनल, और जो प्लेयर सबसे ज़्यादा शाइन किया है आई थिंक इन द फर्स्ट इनिंग्स इज ऑल्सो फ्रॉम केरला, संजू सैमसन. सो वेरी एक्साइटेड एक्चुअली टू एंजॉय दिस cuisine and I think best wishes to Kerala Bar and Kitchen by Tanatan to do their best and shine. I think this is a very prominent and very nice location, and I'm sure it will do well. So best of wishes to Raj Shetty ji and Amit Pal ji. Thank you. मैम यू आर राइट। आपने देखो उनको पहले अपने यहाँ पे देने वाला है। मैम यहाँ देखो मैम। मैम यहाँ पे एक बार। बैक टू फ्रंट। मैम यहाँ पे। मैम यहाँ पे। I'm very happy finally we have a Malayali food in the name of Kerala Kitchen, and I don't think so we have many around because I live in Juhu and I haven't seen many around. I'm very excited to try my vegetarian food, and best of luck. Mr. Raj Shetty, obviously he has great taste in whatever he opens, and we all know all the restaurants which are very famous that he holds, and so looking forward. Yeah.
I'm half South Indian and I can speak Malayalam. My mother is Malayali, so I'm sure I'll bring my mom as well. And I think I request all the Malayalis and all the South Indians to come and visit. आज क्या खाने वाले हो आप यहाँ पे? See, I like my sambar rice and sadhya. Basically, sadhya is vegetarian. I'm vegetarian, so I like anything vegetarian. But I would like to try. I don't know what the cuisine is. If there's something special, I would like to try that. Thank you, ma'am. इधर देखिए, इधर देखिए. रमजान मुबारक मैम. एक चीज चली मैम, रमजान मुबारक. Ramzan Mubarak, guys! कैसे हैं आप? मैम यहाँ भी यहाँ भी है. जी मैम. मैम फिर एक बार. क्या बात है, माशाअल्लाह. बहुत हंस रहे हो, हाँ? कौन है वो? ये यहाँ आप लोग है ना. यस. चलिए आइए. ये लोग बहुत परेशान करते हैं. हाँ, यस मैम. डेफिनेटली यार डिफरेंट फ्लेवर होगा और आई एम वेरी एक्साइटेड. जाकर अंदर टेस्ट करेंगे और हम आते रहेंगे यहाँ पर खाना खाने के लिए. सो गाइस, और जो भी है वो फ्लेवर जो केरला का है वो यहाँ पर आकर खाएं और एंजॉय करें. आफ्टर रमज़ान डेफिनेटली आए. आपने भी खाया पहले केरला का फूड? हाँ, मैंने बहुत खाया. खाया, क्या खाया आपने? इडली, डोसा, सांबर, फिश, हाँ, अप्पम. हाँ, पुष्कर, हम चलेंगे मैं चले केरला. यस कर लेते. बाय गाइस. केरला किचन एंड बार. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. बेसिकली मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है. सादिया इज समथिंग व्हिच आई रियली लव, स्पेशली ऑन दैट केले का पत्ता, द बनाना which you serve on. So I'm looking forward to eating it on a banana leaf अगर मुझे मिल गया. And Malabar biryani is another item that is my very favorite. And पायसम is a dessert which I love to eat. So let's see, अगर ये सब मिला तो I'm just going to hog. जानते हैं और स्पेशली साउथ कुजीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. और केरला किचन एंड बार जो बाय सनातन ग्रुप है, जुहू में आ रहा है, मुंबई में. तो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैंने साउथ में एलपी में बहुत ही यमी खाना खाया है केरला का. स्पेशली देयर अप्पम्स, देयर फिश फ्राई. आई लुक फॉरवर्ड टू इट. और मैं अभी अंदर जाके काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट करने वाली हूँ. मैं आपको रिव्यू दूँगी. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. बिल्कुल, ईद पे याद रखना. केरला के साथ साथ सेवई भी खाना है. ईदी मिलेगी ना? डेफिनेटली मिलेगी. याद रखेंगे. Perfect. Thank you. To be very honest, South Indian is my favorite cuisine altogether, and
Dosa is my favorite, basically bhat is my favorite, and whenever I tend to eat South Indian food, it's very light to digest. So I think I am a big fan of South Indian food, and I'm going to be coming here frequently. Yeah. Thank you so much. Thanks. मैम यहाँ देखिए मैम, आपके राइट में मैम। मैम राइट में, यस यस यस। केरला केरला भाई। I want to say that my connection with Kerala बहुत पहले से है. मैंने बहुत पहले प्रियदर्शन सर की एक फिल्म की थी वेटअप जो बहुत बड़ा हिट हुआ था केरला में. सो केरला फूड और मेरा संबंध जो है वो बहुत पुराना है और बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मेमोरीज हैं. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग टू दिस न्यू रेस्टोरेंट. मेरा घर बहुत नज़दीक में है तो मैं बहुत खुश हूँ. मैं आई थिंक हफ्ते में एक बार तो ज़रूर आऊँगी यहाँ पर. थैंक यू गाइस. शिवानी जी कैसे हैं? शिवानी जी कैसे हैं? शिवानी मैम, you're right. शिवानी मैम, आपकी राइट में मैम. शिवानी जी, हाँ जी, जिंदा हूँ मैं. हाँ जिंदा हूँ मैं बिल्कुल सबके लिए. क्या मैम हो गया? मैम क्या कहना चाहेंगे आज केरला? I just love Kerala, the food from Kerala, and Kerala से मेरा बहुत अच्छा एक अटैचमेंट है. मेरा पहला सॉन्ग हो गई है मोहब्बत आलम पे केरला में शूट हुआ था. सो आई एम गोइंग टू डेडिकेट माय लाइफ. हो गई है मोहब्बत केरला से. थैंक यू. मैम यहाँ देखिए मैम. मैम you're right. मैम राइट में मैम. मैम राइट में. हाँ सबसे बोलो राइट में मैम. सर यहाँ देखिए सर. यस यस यस. Thank you. I'm super excited क्योंकि it's Kerala kitchen and I love Kerala food. ये बहुत दिनों से I think that I was waiting for an authentic place in Mumbai to have Kerala food, and finally it's here. Kerala Kitchen and Bar by Tanate, and congratulations Amit. And I'm sure it's going to do very well because South Indian के बहुत सारे cuisines हैं, like तमिलनाडु के हैं, डोसाज है, इडलीज है, बेने डोसाज है, but an authentic Kerala food. कभी आपने अगर खाया है तो Kerala food is the most yummiest food, and I'm so happy and I'm excited to try all different varieties of food. And I wish a big success to my friend Raj Shetty, and I'm so happy that he's got Kerala Kitchen. Thank you very much. Thank you for having me. Thank you. Thank you. Please. And all thanks to Parun who always invite us to the best of the places, and I'm so looking forward to eat, drink and have a great time. So all the very best. Kerala Kitchen is gonna rock. Thank you. किधर एक करके
यहाँ यही देखिए बाहर आपके सामने सपने वाला चीज है। बुला लिया भाई, बुला लिया, हो गया। हेलो मैम, बाय। हेलो मैम। राइट मैम। मैम राइट मैम। मैम यहाँ देखिए मैम, राइट में मैम। Kerala is absolutely rich in culture, and especially when it comes to food. I love the South Indian food. I love the appam and stew. It's like one of my favorite, and food is something that gives me maximum satisfaction. So I would really want to wish Amit Pal congratulations for your new place and new venture, Kerala Kitchen. I hope this goes good. The food is banging, the place looks nice, and I'm really looking forward to try the food here. Thank you guys. Bye. अभी मेरा कलर नहीं गया है. केरला साड़ी इनका खेली कि नहीं तुम लोग. So Tanatan is my favorite. I used to love that ambience and everything. And Anna, Raj Shetty, I call Anna, and they have this Kerala kitchen, which is very interesting concept जो हमारे यहाँ है ही नहीं. And I love Kerala food. Most healthy food is Kerala food. So I'm very excited to go inside and have all the khana and tasting and everything. Thank you. नोटिस करेंगे ना, मुंह से निकल जाते. वो ऑलरेडी हियर कुछ दिन पहले क्या कहना चाहेंगे यू आर राइट नाउ हियर क्या विशेष देना चाहेंगे This comes from the same team which manages Tanatan, and I have loved Tanatan. I'm a big fan, but my favorite go-to cuisine is the Kerala cuisine. I was there at the time of launch a couple of days back. Incredible food, absolutely amazing interior, very tastefully done, very appropriately done. It's an experience. You have to be here to actually understand what I'm saying. It's a beautiful experience in the place. So I wish Amit all the best, and looking forward now to the formal launch here. थैंक यू मैम प्लीज आपकी याद
बोलो बोलो कुछ नहीं बोलो मैडम आ गई। आई थिंक हर कोई साउथ इंडियन फूड पसंद करता है। आई थिंक हर कोई साउथ इंडियन फूड पसंद करता है, चाहे नॉर्थ का हो चाहे साउथ के, तो पसंद करते ही हैं। मैं खुद नॉर्थ से हूँ, यूपी से हूँ, बट जब मेरा कुछ स्पेशल खाने का दिल करता है तो मैं मंगाती हूँ मैसूर मसाला डोसा, ठीक है। तो आई थिंक ये साउथ इंडियन फूड जो है ये हर कोई पसंद करता है। और फूड के साथ साथ वहाँ की फिल्में भी बहुत पसंद करते हैं, फिल्मों के साथ साथ वहाँ के आउटफिट्स भी बहुत पसंद करते हैं। तो मैं आज यहाँ पे लॉन्चिंग पे आई हूँ, बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर डिनर के लिए आऊँगी या लंच के लिए आऊँगी, ब्रेकफास्ट के लिए भी आ सकती हूँ। Hello, hi. How are you? Good. Hope like you're liking the vibes and everything. Yes. वही मैं बोल रही थी, I think everybody loves the South Indian food and South Indian attire, South Indian films also. Thank you. So, Thank you for coming. Please enjoy some delivery. Thank you. Hope you all got something to eat, because you guys are standing here for 2 hours in the heat. I told them. नहीं मिला? हाँ? I've given a food from Karnataka. No, not that way. We came to भाई क्या कहना चाहेंगे? केरला किचन एंड बार लॉन्च हुआ है, यू आर हियर टू प्रमोट एंड सपोर्ट, क्या कहना चाहेंगे? यार केरला मुझे बहुत अच्छा लगता है, केरला का खाना भी अच्छा लगता है। केरला किचन एंड बार इज़ लाइक, मैं इधर हूँ टू सपोर्ट दिस कॉज। ये जो रेस्टोरेंट है ये अपने एक जानने वाले के है, और पारुल मेरी बहन भी है, तो रमज़ान के महीने में आया, कुछ खाना वाना खाता हूँ केरला का। सी साउथ फूड में कैसा अलग अलग जगह, जैसे मैंने साउथ की बहुत सारी फिल्में किया हूँ, 27 फिल्म किया हूँ, तो हैदराबाद का खाना अलग है, थोड़ा स्पाइसी रहता है, कन्नड़ा का अलग है, तमिल में अलग है, केरला में अलग है। तो केरला का कैसा है, केरला का फूड बहुत लाइट और अच्छा रहता है, मतलब पेट के लिए भी ठीक और शरीर के लिए भी ठीक, और टेस्ट बहुत अलग रहता है। सो आई बीन टू केरला सो मेनी टाइम, आई लव केरला। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके बारे में, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह, कुछ गाने वगैरह? वो मेरी वेब सीरीज आ रही है एक, बॉम्बे बॉन्ड, उसका बहुत जल्दी आपको पता चलेगा प्रोमो में। और दुआओं में याद रखना, रमज़ान मुबारक, अल्लाह के जिक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखना। And this is going to be their home ground. Thank you. Lots We of have good food. Kannadian also. Absolutely. That is वो तो हम लोग 10 years से हम जा ही रहे हैं. So all the best. A big congratulations. Thank you very much. Thank you.
अंदर चलो क्या? यहाँ पर आगे हाँ जी Yes. I look like a curry patta right now. Yeah. Well, I love South Indian food. I love Kerala. As a place, मेरी honeymoon भी वहीं हुई थी. So Kerala holds a very special place in my heart. And the flavors of the south, flavors of the, especially curry patta and their spices, their aroma. I'm a cook myself. I'm a chef, home chef. And मैं भी काफ़ी experiment करती हूँ. Tanatan has been a good brand. I have visited Tanatan and I know the people and I know the quality of food, and I'm sure in a location like this it's going to be packed every day. Thank you, thank you. Love the space and great food here, and I love the location. It is, you know, very centrally located, and I would like to urge everyone who's watching it to please come here, visit once, and you know, just experience the state of Kerala. केरला किस तरह की यादें आपकी जुड़ी हुई है? So I work in the South film industry. I work in the Telugu and Malayalam film industry. So of course Kerala is very close to my heart. I've shot there a couple of times. So केरला का खाना आपको पता है कितना अमेजिंग और कितना अच्छा होता है. तो मैं सबको कहूँगी प्लीज आओ and you know just come and visit the place once. Thank you. मैम look here. Yo. This side just. मैम चश्मा लगा के रखो. मैम look here. मैम look here center. Yo. आइए साथ में. Center. Solo. Thank you. Solo. Okay. सोलो करते हैं. आइए मैम. हाँ बस. Look here, man. Oh yeah. Yo. Ma'am, look here. Look here. Thank you, ma'am.
I really don't have a word. This is my almost a 20th restaurant what I'm opening. First we started from the Tanatan Juhu, then Tanatan Shivaji Park, then we did it in Dubai Tanatan, then we opened Muthuswamy Dadar, then Muthuswamy Khar, and the legacy was just going on. Megumi, now Kerala Kitchen and Bar. I hope I'll take this brand also multiplications. 10 years and 20 restaurants. 20 restaurants. That's a very, very big. Thank you, thank you. That's not easy, and in today's time, especially in food and beverage industry, it's not easy, and you've been just ruling the roost for the longest time. How does it feel to be flying I'm so feeling high? very proud, and I feel if I do one restaurant, I give employment for 45-50 people. So I feel proud for that. And I wanted to open this place during the month of Ramadan. It's a holy month, and I said, why not? It's the best month to open it. So what is the speciality of Kerala Kitchen? Speciality, the menu is very vast. We have almost when you talk about, we don't only serve Kerala food. So we'll be having a Kerala, Mangalorean, as well as Indian. So everybody will get their own taste, whatever they want to eat. Because how the restaurant works these days. You can't completely focus only on one cuisine. So we have almost 150 dishes of Kerala, 100 dishes of Mangalorean, then something 40-50 dishes of Indian, North Indian dishes. I hope I'll get the same kind of love and feedback from the people, and what I got it for so many restaurants. Amit, your recommendation for a person who loves Kerala food, what You should try a mutton cutlet. You won't get mutton cutlet like that anywhere else, what we are serving, and chicken 65. It's not a Chinese 65, it's proper Kerala 65. And what is the message you'd like to give out to all the people who come and try Kerala food? I would give a message if you want to eat specifically Kerala food, you should come for a Sunday brunch, which we are going to call as in Kerala Kitchen Sadhyas, which will be having a 42 dishes and completely Kerala. In that, you'll see pachadi, you'll see paisam, you'll see brown rice, you'll see sambar, you'll see avial, lot of different kind of, and even the fish, mutton, chicken, everything is there. And when you talk about the breads, we have mool parathas, we have Kerala parathas, we have idi appams, we have mee dosas, we have appams, everything. Amit, we wish you that you open in next 10 years, not 20 but 40 restaurants. Thank you. And I wanted to be with you for all the restaurants. You were always here, always with me for opening almost every restaurant of mine. So we are a good team, and Amit, you're going to rock the next. Yes. Thank you very much. Thank you, media. Being a part of our opening. Hope you all also enjoyed being over here, and our hospitality, whatever we have given you. Thank you very much. Thank you. Thank you.